Jai Radha Madhava Jagihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Gopi Janavallabha Vadari Gopi Janavallabha Vadari Yashodanandana Vrajanandana Yashodanandana Vrajanandana Yamunatira Manachari Yamuna Manachari Jai Radha Madhava Jagihari Jai Radha Madhava Jagihari Gopi Janavallabha Vadari Janavallabha Vadari Yashodanandana Vrajanandana Yashodanandana Vrajanandana Yashodanandana Vrajanandana Yashodanandana Vrajanandana Yashodanandana Vrajanandana Yashodanandana Vrajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Premanande, Hari Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivajatacharya Askutar Sukha Shri Srimad His Divine Grace Sudabhai Charna Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivajatacharya Askutar Sukha Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Anantapur Ki Vaishnavrinda Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Shri Shri Radha Shyam Sundar Dev Ki Jai. Tha Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Om Vishnu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nastapraishu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, chapters entitled The Prayers of the Demigods for Lord Krishna in the Womb, text number 37. Shinvangrinam sam smarayam chatintyam Shinvangrinam sam smarayam chatintyam Namami rupani cha mangalani te Namani rupani cha mangalani te Priyasuyastvach charanaravindayor Priyasuyastvach charanaravindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate Shinvangrinan Samsmarayam Chacintyam
Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate Shringan Grinan Samsmayam Shachintayam Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate. Please chant. Gunan Samsmayam Chatintayan Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate. Gunan Samsmayam Chatintayan Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate. Shringan Ginan Samsmayam Sachintayan Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate. Vaishnavis, Shringan Ginan Samsmayam Satintayan Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate. Shringan Ginan Samsmayam Shachintayan Namani Rupani Cha Mangalani Te Vyasu Yatstwach Charanara Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate. Sabhi log Hindi samajhte? Anyone not understand Hindi? You understand Hindi? Yeah? Okay, do everything in Hindi. Do the word for word Shrinvan, everything, right? Sabhi Anawad Tatparya. Just Hindi bol raha hai. Boliye. Shrinvan. निरंतर भगवान के विषय में सुनते हुए श्रवणम कीर्तनम विष्णु गुण कीर्तन करते हुए या सुनाते हुए स्मरण करते हुए भगवान के चरण कमलों में तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन करते हैं। भगवान के चरण कमलों तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन
भगवान के कार्यकल्पों का नामानि उनके दिव्य नाम रूपाणी उनके दिव्य स्वरूप मंगलानि दिव्य होने से आपकी क्रिया से भक्ति में लगे रहने यह जो चरण अरविंद आपके चरण कमलों पर आविष्ट चेता पूर्णतया लीन रहने वाला भवाय भौतिक पद के लिए कल्पते योग्य अनुवाद विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते तथा अन्यों को स्मरण करते हैं वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जिस किसी ने मन से वचन से तथा कर्म से कर्मणा मनसा किया भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है इहा यस्य हरे दास्य वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों न हो निखिलास्त्वया वस्यासु वह बद्ध न रहकर मुक्त हो जाता है जीवन मुक्तः स उच्यते। ऐसा भक्त भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। नारायण पराः सर्वेण कुतश्चन दिव्य कार्यों में लगे रहने के कारण वह भौतिक देहधारी बनने से भयभीत नहीं रहता। भागवत स्कंद 6 17वां अध्याय 28वां श्लोक। इस जीवन मुक्त अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है मम जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितुकी। मैं तो जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहितुकी भक्ति की कामना करता हूँ। चौथा श्लोक। यदि भगवान की इस इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में जन्म लेता भी है तो उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और अगले जन्म में वे हिरण बन गए तो उनकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें अपेक्षा के लिए थोड़ा दंड मिला। नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पद से च्युत भी होता है तो उसका विनाश नहीं होता, किंतु अभक्तों का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। इसलिए भगवद गीता में 9वां अध्याय 14वां श्लोक संस्कृति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो किया जाए। सततं कीर्तयन्तो मां यथन्थश्च विधावतः नमस्कन्थश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा लोग सदैव मेरे यश का कीर्तन करके दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करके मेरे समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि 9 प्रकार के भक्ति योग का परित्याग न करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु साधु तथा शास्त्र के श्रवण साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते के क्रिया क्रिया एक हमें अभक्तों की टीकाएं तथा व्याख्याएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए इसका निषेध किया है। Vaishnava Mukodgirnam Putram Harikantamritam Shravanam Naiva Kartavyam Sarposhchishtam Yatapayaha। हमें चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक इस आदेश का पालन करें और मायावादियों, निर्विशेषवादियों, शून्यवादियों, राजनीतिज्ञों तथा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास न करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, श्री गुरु पदाश्रय अर्थात मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कि जो भगवद गीता के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही गुरु है। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश चैतन्य चरितामृत भगवद 7वां अध्याय 128वां श्लोक। वागरूप या माधुरी या मलारी या जादू पर कभी गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो भगवद गीता प्रस्तुत करता है, कृष्ण के उपदेशों को यथारूप में प्रस्तुत करता है। श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वैष्णव साधु गुरु तथा शास्त्र से ही श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक का क्रियासु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है शारीरिक श्रम या कार्य द्वारा। मनुष्य को भगवान की व्यावहारिक सेवा करनी चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा सारा कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। यह अत्यावश्यक है। किसी के पास भी पहुंचकर उससे कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वह भक्त बन सके। इस श्लोक में ऐसे ही कार्यों की संस्तुति की गई है। क्रियासु यत्सव चरणारविंदयोः। ऐसे कार्य भक्त को भगवान के चरण कमलों का सदा स्मरण दिलाते रहेंगे। कृष्ण विषयक पुस्तकों के वितरण में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण में लीन रहता है। यही समाधि है। Shilvan Ginan Samsmarayam Shachityan Namani Rupani Chamangalani Te Kriyasu Yatstach Charanar Vindayor Avishta Chaitanya Bhavaya Kalpate Om Jnana Chanandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Tubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So today we're reading from the second chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं। This chapter is about the prayers of the demigods to Lord Krishna while Krishna is in the womb of Devaki. ये अध्याय देवी देवताओं के प्रार्थना जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण से किए थे उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने माता देवी जी के कोख में थे। Today we're reading text 37. आज हम 37 श्लोक पढ़ रहे हैं। So the essence of today's verse is that during the course of all of our activities, we should be remembering Krishna. इस श्लोक का एक तात्पर्य है कि हमारे सारे क्रियाओं में हमें हमेशा भगवान की चिंता करनी चाहिए। So devotees, they perform so many activities. भक्त बहुत सारे क्रिया करते हैं। They cook for Krishna. भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। They clean for Krishna. वो साफ सफाई करते हैं भगवान के लिए। They fight for Krishna like Arjuna. वो लड़ाई करते हैं जैसे अर्जुन। They raise children for Krishna. वो शिशुओं को बच्चों को बड़ा करते हैं पालते हैं। They do so many things for Krishna. बहुत सारी चीजें करते हैं क्रिया करते हैं भगवान के लिए। They distribute books for Krishna. वो पुस्तक वितरण करते हैं कृष्ण की। And they chant Krishna's holy names. तो वो कृष्णा के जो नाम है उनका भजन करते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So yena kena prakarane, whatever it takes, we should do something that helps us remember Krishna. कुछ भी करके किसी भी कीमत पर हमें ऐसे कुछ करना चाहिए कि हम भगवान कृष्णा को हमेशा याद करें। We should remember Krishna favorably. हम भगवान कृष्णा को अच्छे भावपूर्वक याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। Anya vilasita shunyam jnana karma anavritam anukulyena krishnanu shivanam bhaktir uttama. That anukulyena krishnanu, this thinking of Krishna, this Krishna smaran should be anukul, which means favorable. कृष्ण भगवान के कृष्ण के जो स्मरण है वो अनुकूल होना चाहिए, यानी कि अच्छे भावपूर्वक होना चाहिए। We should be thinking of Krishna as our best friend. हमें भगवान को हमारे सच्चे मित्र की तरह देखना चाहिए। Bhoktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram yatvamam shanti nachati. Suridam, Surid means friend. Surid means friend. Surid means friend.
सूर्यलिंग का अर्थ So he's the best friend of Sarva Bhutanam, all the living entities. भगवान सारे जीवों के सच्चे मित्र हैं। So Krishna is the supreme controller. भगवान कृष्ण परम नेता है। Ishvara Sarva Bhutanam Sarva. That Ishvara Parama Krishna is of all the Ishwaras, he's the supreme. भगवान कृष्ण सुप्रीम है, सबसे उच्च स्तर पे है। So then he's our best friend. तो वो हमारे सच्चे मित्र हैं। So if the supreme controller is our best friend, then we have nothing to fear. जब परम जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सबसे उच्च स्तर पर है, जब वो हमारे सच्चे मित्र हैं, तो हमें भय भी की कोई जरूरत नहीं, कोई कारण नहीं। It's interesting in this purport, Prabhupada mentions something about chanting the holy names. बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि प्रभुपाद इस तात्पर्य में He says that in Bhagavad Gita, therefore recommends one always engage at least in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता के अनुसार हमें हमेशा भगवान के स्मरण में और कीर्तन में होना चाहिए। Okay. Thank you. So, Bhagavad Gita 9:14 therefore recommends that one always engage at least in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. इसलिए भगवद गीता 9वें अध्याय 14वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्यक्ति अपने मन को भगवान के नाम को जप करने में लगाए। Srila Prabhupada says at least. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कम से कम। That means that there's something more than chanting the holy names. उसका मतलब है कि ये कम से कम है, इससे ज़्यादा और करना चाहिए। And Prabhupada is talking about remembering Krishna. और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवान का स्मरण करने के लिए बता रहे हैं। So when we chant Hare Krishna, it should not just be with our lips. तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो केवल अपने होठों से उसको नहीं करना चाहिए। If we only chant with our lips, that's okay. At least chant. और अगर हम अपने केवल होठों से जप करते हैं तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि कम से कम उतना तो करते हैं। But even more than chanting with the lips, we should be chanting with our mind. तो होठों से जप करने के साथ-साथ उससे भी ज़्यादा हमें अपने मन से भी जप करना चाहिए। Nam, Roop, Guna, Leela, and Dham. नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। We should be chanting with our lips, and we should be contemplating the root, the form of the Lord. हम अपने होठों से जप करें और अपने मन में भगवान के रूप के बारे में चिंतन करें। And gradually, by chanting the holy names, all of these things will be gradually revealed to us automatically. धीरे-धीरे नाम का जप करते-करते स्वयं ही यह सारी वस्तुएं हमारे हृदय के अंदर आ जाएंगी। Nam, Roop, Guna, Leela, and Dham. We should be Krishna conscious. नाम, रूप, गुण, लीला और धाम हमें कृष्ण चेतना भावित होना चाहिए। So this is the statement by the demigods as they're offering prayers to Krishna in the womb. तो जब देवता लोग भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ये सब वाक्य बता रहे हैं। Devaki had 6 children. देवकी के 6 पुत्र थे। They were all killed by Kamsa. कंस ने उन सभी को मार दिया। And then the 7th child was in the womb. और 7वें पुत्र जब उनके गर्भ में थे, Krishna instructed Yogamaya, you take this child and you transfer into the womb of Rohini. कृष्ण ने योगमाया को आदेश दिया कि आप इस बच्चे को ले लीजिए और इसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। So this was done. तो ये कर दिया गया था। It appeared like Devaki had a miscarriage.
और देखने से ऐसा लगा कि जैसे देवकी का गर्भपात हो गया। And then it was the 8th child was in the womb. और तब 8वां पुत्र उनके गर्भ में था। Devaki became effulgent देवकी बहुत ज्योतिर्मय हो गई and beautiful. बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। Kamsa could understand, Lord, Supreme Lord has come to be inside Devaki's womb. और कंस उनको देखते ही समझ गया कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ के अंदर आ चुके हैं। This was amazing. ये बहुत अनोखा था। Kamsa was in fear. कंस बहुत भयभीत था। 8th child has come. 8वां पुत्र आ चुका है। My death has come. मेरी मृत्यु आ चुकी है। Maybe I should kill the child in the womb. मुझे इस बच्चे को गर्भ में ही मार देना चाहिए। No, I will wait until the child comes out, then I will do the needful. नहीं, मैं इसको बाहर आने तक प्रतीक्षा करूँगा और जैसे ही बच्चा बाहर आएगा उस समय मैं इसको मार दूँगा। Devaki was so effulgent. देवकी इतनी जो प्रकाश में थी। All the devatas, they came, began offering prayers. सभी देवता आए और देवकी के लिए प्रार्थना करने लगे। And in this section of Bhagavatam, we're hearing all the different prayers of the devatas. और श्रीमद् भागवतम के इस हिस्से में हम देवताओं की विभिन्न प्रार्थनाओं को सुनते हैं। So today's prayer is very beautiful. आज की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर हैं। It's like all of sadhana bhakti encapsulated in one verse. ऐसा लग रहा है कि भक्ति के सारे सिद्धांत एक श्लोक में ही समाहित कर दिए हैं। Demigods, they prayed. देवता प्रार्थना कर रहे हैं। Shrinvan Grinan Samsmarayam Chatintyan. Shrinvan, you should constantly hear about the Lord. देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान के बारे में लगातार सुनना चाहिए। Shravanam, Kirtanam, Vishnu, like that, constantly hearing about the Lord. लगातार भगवान के बारे में सुनना चाहिए। Grinan, chanting or reciting भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए। the holy name of the Lord भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। and His activities. और उनकी लीलाओं का। Tadvad Visargo Janata Gavitlavo Yasmin Pratishlokam Abhavatyapi Namani Anantas Chalyanon Kinchaniyat Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadhavaha. Bhagavatam is the chanting of the Lord's glories. श्रीमद् भागवतम भगवान की प्रशंसा का ग्रंथ है। It will create a revolution in the lives of an impious civilization. और यह श्रीमद् भागवतम इस संसार के जो पापी प्रजा है उसके जीवन को परिवर्तित कर देगी, उसके जीवन में क्रांति ले आएगी। It contains the name, the form, the paraphernalia, the activities of the Supreme Personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ उसके अंदर है। Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadhavaha. It should therefore be heard, sung and accepted by all men who are honest. इसलिए जो भी अच्छे लोग हैं उनको इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और गाना चाहिए। Grinanti means to chant, to sing. गृणंति का मतलब होता है कीर्तन करना। So this is mentioned by the devatas today. Grinan. देवताओं ने भी इस श्लोक में गृणन के बारे में बताया। Then some smarayam. The smaran means to remember. इसके बाद स्मरण आता है जिसका अर्थ है याद करना। And the prefix sam means complete. और जब स्मरण के आगे सम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मतलब होता है These demigods, they don't just say smaran, they say sam smaran, complete remembrance. देवता यहाँ पर केवल स्मरण नहीं बोल रहे हैं, Like we have kirtan. संस्मरण मतलब पूर्ण रूप से याद करना और कीर्तन करना। Sorry, we chant in kirtan. We chant in kirtan. हम कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। So then, better than kirtan is sam kirtan. तो कीर्तन से अच्छा संकीर्तन है। That's the complete chanting of the Lord's names. इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से भगवान के नाम का जप करना। That's when all of us chant together. जब हम एक साथ कीर्तन करते हैं, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Chaitanya, it means contemplating the activities of the Lord.
चिंतन का मतलब होता है भगवान की लीलाओं के बारे में चिंतन करना। In Hindi, sometimes we say, "Bahut chintya hai," right? We have so much anxiety, chinta. हिंदी में कभी-कभी हम बोलते हैं कि बहुत चिंता है आपको। But in this case, it's positive. We should have bahut chintayan. We should have thoughts always of the Supreme Lord. परंतु यहाँ पर इस श्लोक में जो चिंता है वो एक अच्छी चिंता है, क्योंकि हमें भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में लगातार चिंतन करना चाहिए। Always remembering the Lord will always purify us. भगवान को हमेशा याद करना हमें हमेशा शुद्धता को प्रदान करता So है। how to always remember the Lord? कैसे हमेशा भगवान को याद करें? We should do some activities for the Lord. हमें भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। Srila Prabhupada stresses one very special activity in the purport today. श्री प्रभुपाद आज के तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बता रहे हैं। He says we should distribute books. श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें पुस्तक वितरण करना चाहिए। He's very specific. बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे He हैं। talks about the word kriyasu, by manual labor, by work. क्रियासु शब्द का मतलब होता है कार्य के द्वारा, हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं। We are not just armchair philosophers, हम लोग केवल कुर्सी पर बैठ के सिद्धांत बोलने वाले नहीं हैं। sitting on a chair with some arms and having a discussion. हम लोग केवल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ दर्शन शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। Srila Prabhupada would say, do something practical. श्री प्रभुपाद बताते थे कि कुछ वास्तविक रूप से करो। One time Srila Prabhupada was at Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. एक बार श्री प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर में थे वृंदावन में। There was a devotee and he was just chanting verses and glorifying Prabhupada. वहाँ पर एक भक्त थे, वो लगातार संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे, प्रभुपाद की प्रशंसा भी कर रहे थे। His name was Vishal Prabhu. He left his body now. उनका नाम था विशाल प्रभु, उन्होंने अभी अपना देह त्याग कर So दिया। Prabhupada was on a morning walk. He was doing parikrama of the mandir. प्रभुपाद सुबह के समय भ्रमण कर रहे थे और मंदिर की परिक्रमा कर रहे He थे। saw some water on the ground. उन्होंने जमीन पर कुछ जल लगा हुआ देखा। Prabhupada told Vishal, stop chanting these verses, clean up this water, do something practical. प्रभुपाद ने विशाल प्रभु से बोला कि वो जो आप जप कर रहे हो उसको छोड़ के ये पानी की सफाई करो, कुछ प्रैक्टिकल कार्य करें। So we are not so advanced, we can sit in a room ourselves and chant 3 lakh Nam a day and just remember Radha and Krishna. हम लोग इतनी उच्च अवस्था में नहीं है कि हम एक जगह बैठकर हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करते रहें, भगवान को स्मरण करते रहें। We will think of just women and money. हम केवल स्त्री और पैसे के बारे में सोचते रहेंगे। So we should engage in practical service to the Lord. इसलिए हमें भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। And Srila Prabhupada is stressing in this verse book distribution. श्री प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि पुस्तक वितरण करना चाहिए। Prabhupada says, in our Krishna consciousness movement, all our activities are concentrated upon distributing Krishna literature. श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावनामक आंदोलन में हमारे सारे क्रियाकलाप ये कृष्ण भक्ति के जो साहित्य है उसके वितरण पर केंद्रित हैं। It doesn't mean half of our activities, he says all of our activities. यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे आधे काम उस पर केंद्रित हैं। We- प्रभुपाद बता रहे हैं कि सारे कार्य उस पर केंद्रित हैं। We clean the temple nicely so when people come, the deities are pleased, we get the Shakti to distribute books. हम मंदिर की सफाई करते हैं जिसको देख के लोग आते हैं और विग्रह भी खुश होते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है कि हम पुस्तक वितरण कर सकते We cook nice prasadam, हैं। हम अच्छा प्रसाद so बनाते हैं devotees are strong, जिससे कि भक्त लोग शक्तिशाली रहें they can distribute books. और वो पुस्तक वितरण कर सकें। People who honor the prasadam, लोग जो उस प्रसाद को स्वीकार करते they हैं will think, oh, such nice prasadam, let me buy one book. जब वो प्रसाद स्वीकार करेंगे तो बोलेंगे कितना अच्छा प्रसाद है, मुझे आपसे तो एक पुस्तक लेनी चाहिए। We raise children in Krishna consciousness. हम बच्चों को बड़ा करते हैं कृष्ण भक्ति में। Later they may also distribute some books. बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी पुस्तक वितरण करेंगे। We do some prachar. हम कुछ प्रचार करते हैं। We hope people that we speak with, they'll buy Srila Prabhupada's books. हम लोगों से बात करते हैं जिससे कि वो श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को स्वीकार करें। We read Srila Prabhupada's books. हम श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं। So that when we sell someone a book, they say, what is inside the book?
जिससे कि जब हम किसी को पुस्तक वितरण करें वो हमसे अगर पूछेगा कि इस पुस्तक के अंदर क्या है, we shouldn't just say, well, I just sell the books, I don't read them. तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे मैं तो केवल वितरण करता हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं इसके We अंदर। should know what is inside. हमें पता होना चाहिए कि इस पुस्तक के अंदर क्या It's है। very interesting. Prabhupada is doing this for our benefit. प्रभुपाद यहाँ पर हमारे लाभ के लिए ये वस्तु बता रहे हैं। Prabhupada says, this is very important. प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। One may approach any person and induce him to read Krishna literature. हमें किसी भी व्यक्ति के पास जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति के ग्रंथ पढ़ सके, so that in the future he may also become a devotee. जिससे कि भविष्य में वो व्यक्ति भक्त बन सके। The books make people devotees. प्रभुपाद जी की पुस्तक जो है वो भक्त बनाती है। Who came to Krishna consciousness here by receiving one of Srila Prabhupada's books? हम में से कितने लोग हैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के कृष्ण भक्ति में आए हैं? Many, बहुत लोग, many people. So I remember I was in New York. मैं न्यूयॉर्क में था। I was a hippie. मैं हिप्पी था। I had long hair, मेरे बड़े बाल थे। a big beard. बहुत बड़ी दाढ़ी I was थी। carrying a guitar मैं गिटार साथ में and रखा my trumpet, bugle, ट्रम्पेट मेरे साथ में था। tutari, right? उत्तरी। Yeah. Yeah. So then one devotee approached me in the airport. तो एयरपोर्ट पे एक भक्त मेरे पास आए He said, "Do you play in a band?" और उन्होंने पूछा कि आप बैंड बजाते हैं? I said, "Yes." मैंने बोला कि हाँ। He said, "What is the name of your band?" तो उसने पूछा कि आपके बैंड का नाम क्या है? I said, "The Om Band." मैंने बोला तो ओम बैंड। He said, "Do you know what Om means?" उसने पूछा कि ये ओम का मतलब क्या है? I said, "No." मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। He took out Bhagavatam, उन्होंने भागवतम निकाला, looked in the index, इंडेक्स में देखा and found the Om, और ओम को वहाँ पे देखा and we began reading together. और हम ओम उस जगह को पढ़ने लगे साथ में। Om represents the Supreme Personality of Godhead, impersonal representation. ओम का मतलब है कि ओम जो है भगवान की निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। I said, "Oh, very nice." मैंने बोला बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा. He said, "Would you like to keep the book?" उसने पूछा कि आप ये पुस्तक रखना चाहेंगे क्या? I said, "Yes." मैंने बोला हाँ, मैं रखूँगा। He said, "Would you like?" I said, "Can I give you a donation?" मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कुछ डोनेशन दे सकता हूँ? He said, "Yes." उसने बोला हाँ। Out of all the nations in the world, which is the next best nation? This is a question for all of you. Out of all the nations in the world, which is the best nation? संसार के सारे देशों में सबसे अच्छा देश कौन सा है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। The donation. So I said, "Can I give you the donation?" He said, "Yes." तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको डोनेशन दे सकता हूँ क्या? I gave him $2. मैंने उनको $2 दिए। I was pretty poor that time. मैं उस समय बहुत गरीब था। So then he walked away, I walked away. वो भी चला गया, वो He said, "Wait, come back. फिर उसने बुलाया कि आओ वापस। You dropped this from your pocket. उसने बोला कि आपने अपने जेब से इसको गिरा दिया। $20. $20 He returned it to me. और उसने $20 मुझे वापस कर दिया। Oh, this devotee is so honest. और भक्त कितने ईमानदार होते हैं। Book must be very special. वो ये मैंने सोचा कि भक्त इतने ईमानदार होते हैं तो ये पुस्तक बहुत अच्छी होगी। So in our personal dealings, we should be very honest and have good qualities. तो इसका मतलब है कि जब हम व्यक्तियों से बात करते हैं तो हमें बहुत ईमानदार होना चाहिए। This will impress upon the hearts of others. और ये दूसरे के हृदय को प्रभावित करता है। So I began reading Bhagavatam. मैं भागवत पढ़ना चालू कर दिया। I read the biography of Lord Chaitanya. और मैंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को पढ़ा। When I read the Shikshastakam, my life changed. जब मैंने शिक्षा शास्त्र को पढ़ा तो मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। Especially the 4th shloka. स्पेशली चौथा, विशेष रूप से चौथा श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतां भक्तिरहोतु की त्वयि. न धनम न janam na sundaram. I don't want money,
fame, wealth, woman, nothing. मैं पैसा भी नहीं चाहता हूँ, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता हूँ, स्त्री भी नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता हूँ। I just want mama janmani janmanishvare bhavatad bhaktir ahoitaki tvayi. Just your unmotivated devotional service, birth after birth. मैं केवल आपकी शुद्ध भक्ति हर जन्म में करना चाहता हूँ। So Prabhupada mentions this today in today's purport. और श्री प्रभुपाद आज के तात्पर्य में बताते हैं। He says advanced devotee is jivan mukta. He's liberated even in this body. वो बताते हैं कि जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, वो जीवन मुक्त हैं, इस शरीर में रहते हुए भी वो संसार के बाहर हैं। And if the Lord wants him to take birth in the material world, he has no objection. और अगर भगवान चाहते हैं कि वो भौतिक संसार में जन्म ले, तो भक्त को कोई समस्या नहीं होती। He just wants to serve the Lord birth after birth. वो केवल हर जन्म में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। So this is the mood of the highly advanced preacher. ये बहुत उन्नत भक्त और प्रचारक का स्वभाव होता He है। doesn't even want to go back to Godhead. वो भगवान धाम भी जाना नहीं चाहता। He just wants to serve the Lord birth after birth. वो केवल हर जन्म में भगवान की सेवा करना चाहता है। So we should do our best to be qualified to go back to Godhead. हमें अपने तरफ से बहुत प्रयास करना चाहिए जिससे कि भगवान धाम जाने के लिए बन सके। And then if the Lord wants us to go back to Godhead, great. And if he wants us to stay in the material world, great. और तब उसके बाद अगर भगवान चाहते हैं हमें भगवान धाम ले जाना तब भी बहुत अच्छा है, और भगवान अगर चाहते हैं कि हम इस संसार में रहें तब भी बहुत अच्छा है। We just want to serve. हम केवल सेवा करना चाहते हैं। Because our services should remind us of Krishna. क्योंकि जब भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा करने से हमें कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। Especially book distribution. विशेष रूप से पुस्तक वितरण करते हैं। Prabhupada concludes the purport by saying, by fully concentrating on distributing books for Krishna, one is fully absorbed in Krishna. This is samadhi. Srila Prabhupada ki jai. Are there any questions or comments? Yes, Prabhu. Give him the mic. Thank you for your wonderful things. But I have a question, practical question. When we go for book distribution, many students tell that because it's available free on internet, it's very easy to read. So why should I buy? Why should I spend money? And many students are reading online. एक प्रश्न है कि जब हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो युवा हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं कि पुस्तकें तो इंटरनेट पे भी फ्री में है, तो हमें अलग से पुस्तक खरीदने की क्या आवश्यकता है? You can tell them that we are using the money to help distribute Krishna consciousness, and your money will be used for a good cause, and you will get benefit. Your money will be used for the right purpose. हमें उनको बताना चाहिए कि हम ये जो पुस्तक वितरण से जो पैसा मिलता है उसको अच्छे कार्य में उपयोग करते हैं, तो आपका पैसा अच्छे कार्य में उपयोग किया जाएगा। You can also tell them, give your eyes a break from looking at that bright screen. हम उनसे बता सकते हैं कि जो मोबाइल की स्क्रीन पे लगातार देखते रहते हो उससे थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, एक किताब पढ़ सकते हो। And reading a book is sometimes so much nicer than looking at a screen. और पुस्तक पढ़ना कई बार केवल मोबाइल की स्क्रीन पर देखने से बहुत अच्छा होता है। You can use a highlighter, you can underline things, you can focus more. जब पुस्तक पढ़ते हैं तो आप अपना ध्यान अच्छे से केंद्रित कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। And when you finish, it makes a nice gift for your friend. और जब आप इसको खत्म कर लेते हैं तो ये पुस्तक अपने मित्र को देने के लिए भी बहुत अच्छा उपहार हो जाती है। So like this, we can encourage them. इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। And try to get their contacts. Do contact Sankirtan. Get their phone number, their name. और उनका नंबर हम ले सकते हैं, अपना नंबर उनको दे सकते हैं जिससे कि बाद में Invite them to the temple. उनको मंदिर में बुला सकते हैं। Because it's beneficial that when someone reads Prabhupada's books, they should have association of devotees that will help them advance. क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति पुस्तक प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा है और भक्तों के संग में रहते हैं तो उनको उनके लिए प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है। Does that answer your question? Good, thank you. Next question, go ahead.
Give him the mic, please. Yes, Prabhu, please go ahead. हरे कृष्ण। Hare Krishna. वैदिक शास्त्रों से मालूम पड़ता है कि संन्यास लेना कलयुग में वर्जित है। अगर कल आपने कथा में बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, पर हम देखते हैं कि दूसरे वैष्णव भी संन्यास ग्रहण करते हैं। तो क्या समस्या का समाधान कीजिए? Thank you for your question. The question is, Vedic scripture says that sannyas is prohibited in Kali Yuga. So then why Lord Chaitanya accepted sannyas and other acharyas are accepting sannyas? So the sannyas referred to in the Vedic literature that's prohibited is the monistic ekadanda sannyas. जो वैदिक शास्त्रों में जिस संन्यास को प्रतिबंधित किया गया है वो एक दंड संन्यास कहलाता है। That is a sannyas for the purpose of attaining impersonal liberation. वो जो संन्यास है वो निराकार मुक्ति की प्राप्ति के लिए लिया जाता है। They greet each other, Om Namo Narayanaya. वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। You are Narayan, I am Narayan, Daridra Narayan, everyone is Narayan, the chicken is Narayan, the dog is Narayan, everyone is Narayan. वो बोलते हैं आप भी नारायण हैं, मैं भी नारायण हूँ, दरिद्र भी नारायण है और मुर्गी भी नारायण है, सभी नारायण हैं। This is bogus. और ये बोगस है। ये कचरा चिंतन है. This is not good thoughts. ये अच्छा विचार नहीं। Yeah, so this is forbidden. इसलिए वो प्रतिबंधित है। Don't take sannyas for this purpose. संन्यास को उस उद्देश्य के लिए नहीं लेना चाहिए। Lekin Tridandi Vaishnav sannyas, it means mind, body and words for the service of Krishna. त्रिदंडी वैष्णव संन्यास का मतलब होता है मन, बुद्धि और वाणी को भगवान की सेवा में लगाना। For the purpose of preaching Krishna consciousness. कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के For the लिए। purpose of increasing the book distribution. पुस्तक वितरण को बढ़ाने के लिए। So this is allowed. तो ये इसको मना नहीं किया गया। Does that answer your question? Okay, good. Thank you. Yes, next question. Go ahead, Prabhu. Give him the mic. Question, comment, reflection. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, we should not hear from Avaishnavas. Yes. So, from Mayavadis, from Vaidis, from politicians, from so-called scholars, we should not hear. What about the Vaishnavas? There are Vaishnavas apart from ISKCON. They are not the Gaudi Vaishnava, but they are Shri Vaishnavas, Mata Vaishnavas, or Nepal, there are other Vaishnavas. And now this is a time of social media, so there are so many lectures available on YouTube and other platforms. So how devotees, we are loyal for Srila Prabhupada, but sometimes devotees are influenced by other speakers also, and they are Vaishnavas. So what should be our attitude? I mean, what precautions we should keep, or we should completely avoid them? Okay. How should we keep it? Okay, I think I understand your question. You can have the mic back. So if I understand your question properly, you're saying, basically, can we receive shiksha outside of ISKCON? सामान्य ये प्रश्न है कि आजकल सोशल मीडिया के समय में हमें जैसे पता है कि अवैष्णव से नहीं सुनना है, पर कोई अगर वैष्णव है और दूसरे संप्रदाय का है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और अलग संप्रदाय का है, तो उससे सुना जा सकता है क्या? सुना जा सकता ठीक है या नहीं है? ये प्रश्न है। या क्या सावधानी रखना चाहिए? Did he get your question right? Yes, okay. Shivaram Maharaj has written one book called Shiksha Outside ISKCON. श्री शिवराम स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, ISKCON के बाहर से शिक्षाएं स्वीकार करना। It's not recommended. उन्होंने उसमें लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए। Because Srila Prabhupada's mood and mission is very specific. क्योंकि श्री प्रभुपाद का जो स्वभाव है, It's unique. जो स्वभाव मूल है वो What other Vaishnavacharya will you find? With the exception of perhaps Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who will say that Krishna Smaran and all of our kriyesu, all of our activities should be dedicated towards book distribution. श्री प्रभुपाद का मूल और मिशन बहुत यूनिक है और कोई भी आचार्य इस प्रकार से केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से हो सकते हैं जो कि इस प्रकार से बताए कि पुस्तक वितरण जो है वो सबसे अच्छा उपाय है। This is a unique perspective. ये विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं का। One time Srila Prabhupada was asked that, Srila Prabhupada, when you leave
should we accept someone else as our guru? His disciples had asked him. श्री प्रभुपाद से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जब आप चले जाएंगे तो हम किसी और से शिक्षा ले सकते हैं क्या? Srila Prabhupada began to cry. श्री प्रभुपाद रोने लगे। He said, my guru was no ordinary person. श्री प्रभुपाद ने बोला कि मेरे गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। He saved me. उन्होंने मुझे बचा लिया। So Srila Prabhupada and the followers of Srila Prabhupada have saved all of us. श्री प्रभुपाद उनके जो अनुगामी भक्त हैं उन्होंने हमें बचाया है। So just like a chaste wife is chaste to her husband, the chaste disciple in ISKCON should be chaste to the preaching mood and mission of Srila Prabhupada. जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए सती पतिव्रता रहती है, उसी प्रकार से जो शिष्य हैं ISKCON के जो अनुगामी हैं उनको प्रभुपाद के लिए। Now we worship and take the dust of the lotus feet of all Vaishnava devotees of the Lord. हम भगवान के जितने भी वैष्णव भक्त हैं उनके चरणों की धूल स्वीकार कर सकते हैं, उनको पूजा कर सकते हैं। But generally, ISKCON devotees should exclusively hear and practice the teachings of Srila Prabhupada and his followers. सामान्यतः ISKCON के भक्तों को विशेष रूप से निश्चित रूप से ही प्रभुपाद और उनके अनुगामी भक्तों की ही शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। Otherwise, they may be diverted. अन्यथा ये दूसरे दिशा में जा सकता है। They may get confused. लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। They may get deviated. और वो पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं। If you have two rays that are parallel, they run together towards infinity. Right? Parallel rays, infinity, they'll go parallel. अगर हमारे पास दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, वो हम देखेंगे कि अंत तक साथ चलती रहेंगी। 1 degree deviation. तो अगर उसमें से एक रेखा थोड़ी सी भ्रष्ट हो जाती है, After some time, what will happen? उस समय बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है। Don't take the chance. इसलिए वो हमें रिस्क नहीं लेना Be चाहिए। chaste to the teachings of Srila Prabhupada and his followers. श्री प्रभुपाद उनके अनुगामी भक्तों की शिक्षाओं के प्रति ही सजग रहना चाहिए। Srila Prabhupada gives the example of the bundle of sticks. श्री प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं That you have one stick, easily you can break. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अगर एक लकड़ी है तो आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है। You put bunch of sticks together, tie them, you cannot break them. बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध दो फिर उसको तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। So the followers of Srila Prabhupada, they should stick together and they should follow the teachings of Srila Prabhupada. इसलिए श्री प्रभुपाद के अनुगामी भक्तों को साथ रहना चाहिए और प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। Srila Prabhupada's printing press, the BBT, श्री प्रभुपाद की जो प्रेस BBT है, whose books do they print? इसकी पुस्तक को प्रिंट करते हैं Srila Prabhupada and his followers. श्री प्रभुपाद उनके अनुगामी भक्तों And one book by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Brahma Samhita. और केवल एक पुस्तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रिंट की है श्री ब्रह्म संहिता। Kamsa, he represents the fear. He put the fear of bhakti. Devaki represents bhakti, Kamsa represents the fear. देवकी जो है वो भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और कंस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। That we should be afraid of Maya. हमें इस तरह से माया से भयभीत होना चाहिए। So once again we worship all Vaishnava acharyas, all Vaishnava devotees, all Vaishnava sampradayas, but at the same time we should be afraid. What if I get deviated? What if the mood of this personality is a little bit different from Srila Prabhupada? तो हमें सभी वैष्णव संप्रदाय सभी का सम्मान करना चाहिए, परंतु हमें भयभीत भी रहना चाहिए कि अगर मैं कहीं पथभ्रष्ट हो गया, किसी आचार्य का मूड अलग रहा तो क्या होगा? One disciple said to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, I want to go and take initiation from this devotee in Radhakund. He will give me something higher than what you have given, Srila Prabhupada. श्री प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद से बोला कि मैं राधाकुंड में जाके एक व्यक्ति से दीक्षा लूंगा, वो मुझे कुछ ऊंचा देंगे जो कि आपने मुझे नहीं। Even in Prabhupada's presence, he was getting diverted. उस समय प्रभुपाद की उपस्थिति में भी वो व्यक्ति इस प्रकार से पथभ्रष्ट हो गया। Prabhupada said, yes, I give you my blessings to go to hell. And then Prabhupada told the devotees, he's not going to Radhakund. He's going to Narakakund. So very dangerous.
खतरनाक है। Internet is giving us so many options. इंटरनेट हमें बहुत सारे विकल्प देता है। Better to be chaste. हमें प्रभुपाद के लिए पतिव्रता होना चाहिए। The lotus feet of Srila Prabhupada श्री प्रभुपाद के चरण के लिए आश्रित होना चाहिए। and his followers. और उनके अनुगामी भक्तों के लिए। Does that answer your question? Thank you so much. All right, let's start. Okay, we'll take last question. Go ahead, Mataji. Thank you for your lecture, Maharaj. How do we know that Lord or Shri Prabhupada is pleased with our service? Whatever little service we are doing, we often feel that we are not satisfied. So do we ever know that, how do we know Krishna is pleased with us? Okay, Mataji's question is, how do we know if Krishna is pleased with our service? प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि श्री भगवान और भगवान कृष्ण हमसे प्रसन्न हैं? Yeah, so Krishna has his representative, the spiritual master. कृष्ण के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु होते हैं। Yasyat prasadat bhagavat prasaro, yasyat prasadat nagati kutopi. That when the spiritual master is pleased, Krishna is pleased. जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण भी प्रसन्न है। When the spiritual master is not pleased, then Krishna is also not pleased. जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न नहीं है उसका मतलब है कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है। So we should take the guidance of the spiritual master. हमें गुरु से आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा लेना चाहिए। If the spiritual master says, bring me water, we should bring water, not milk. जब आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं कि मेरे लिए पानी लाओ, पानी लेके आना चाहिए, दूध लेके नहीं आना चाहिए। So if we execute this order of the spiritual master to the best of our capacity, then certainly he'll be pleased. तो अगर हम आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अपने हिसाब से सबसे अच्छे से करने का प्रयास करते हैं तो गुरु प्रसन्न होंगे। And in ISKCON, the temple president and the temple management is representing the spiritual master. और इसको संस्था के अंदर मंदिर का अध्यक्ष और मंदिर का जो प्रबंधन है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। So it's a great opportunity by having this ISKCON temple. There are so many opportunities for service. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इसको मंदिर होने से हमारे पास सेवा का बहुत अवसर होता है। So we should do them to the best of our capacity. हमें अपने हिसाब से सबसे अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। Hopefully the devotees will be pleased. तब भक्त प्रसन्न होंगे। And if we do it in a mood of cooperation, then we can hope for all success. अगर हम आपसी सहयोग के द्वारा करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। Does that answer your question? Yes, thank you so much. Also, we get this feeling, when we're eating a meal, we feel satisfied. We can stop eating after some time. तो हमें भी अनुभव होता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कब पेट भर गया है और हम संतुष्टि प्राप्त अनुभव करते हैं। You get a feeling of satisfaction. हमें संतुष्टि का अनुभव होता है। Of course, we never stop serving. ऐसा नहीं कि हम सेवा मतलब प्रसाद सर्विस करना बंद कर देते हैं। But from the seva, we do get a feeling of satisfaction. परंतु सेवा से हमें संतुष्टि मिलती है। So that's also a good indication that Krishna is pleased. ये भी एक प्रमाण है कि कृष्ण जो है प्रसन्न है। Hare Krishna. Yes, Prabhu. Just an extension to the previous question. What about bhajans and kirtans? What about bhajans and kirtans? One example is Tukaram Maharaj. Another example is there are so many rasiyas from Braj which are commonly sung. Okay, you can give him the mic. इससे प्रश्न के आगे एक प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं कि भजन और कीर्तन के बारे में क्या है, जो भजन कीर्तन ब्रज के भक्त गाते हैं या तुकाराम महाराज हैं या और भी भजन कीर्तन है, उनको सुनना चाहिए कि नहीं, सुनना और गाना चाहिए कि नहीं। So Tukaram Maharaj is within our line. तुकाराम महाराज हमारे संप्रदाय के अंदर आते हैं। As Srila Prabhupada mentions him in the Chaitanya Charitamrita. श्री प्रभुपाद ने उनके बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। Srila Prabhupada specifically says that Tukaram Maharaj is a disciple of Lord Chaitanya. श्री प्रभुपाद वहाँ पर बताते हैं कि तुकाराम महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। So Srila Prabhupada has in his own books authorized
Tukaram Maharaj and his teachings as part of our line. श्री प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में तुकाराम महाराज और उनकी शिक्षाओं को अनुमोदित किया है। That being said, we should be careful who we hear Tukaram Maharaj's or any other person's teachings from. तो हमें तब भी सावधान रहना चाहिए कि तुकाराम महाराज की शिक्षाएं हम किससे सीख रहे हैं। Milk touched by the lips of a serpent becomes poisonous. या कोई दूध को कोई सांप छू लेता है तो दूध जो है वो जहर करता है। So within different schools of thought, there are so many Mayavadis and impersonalists that may sing different bhajans, including Tukaram Maharaj's bhajans. तो बहुत सारे कई मायावादी भी ऐसे हो सकते हैं जो कि तुकाराम के भजन भी गाए। So Lord Chaitanya has forbidden us, don't hear from Mayavadis. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि मायावादियों से नहीं सुनना है। We should strictly follow this injunction, Srila Prabhupada says in his purports. श्री प्रभुपाद इस बात पर बता रहे हैं कि हमें इस निर्देश का पालन करना चाहिए। Never try to hear from Mayavadis, impersonalists, voidists, politicians, or so-called scholars. कभी भी हमें मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी और राजनेताओं से नहीं सुनना चाहिए। And in Vraj and many places we have so many Sahajya groups. और ब्रज में भी कई जगह पे बहुत सारे सहजीय ग्रुप हैं। They sing bhajans वो भजन गाते हैं and then go and smoke bidis. तो इस बीड़ी भी पीते हैं। I was in Vrindavan in one major temple with Indradumna Maharaj and Shipalad Prabhu. मैं इंद्रदुम्न महाराज के साथ वृंदावन के एक बहुत बड़े मंदिर में गया था। There was one person wearing a nice silk sari. वहाँ पे एक व्यक्ति थे वो सिल्क की साड़ी पहने हुए थे। And Shipalad said, "You see that person wearing the silk sari?" और मुझसे वो पूछा कि आपने उस भक्त को देख रहे हैं जो सिल्क की साड़ी पहने? I said, "Yes." मैंने बोला कि हाँ। He said, "He needs a shave. He needs a shave. He needs to shave his face." उनको अपने सेविंग करने की आवश्यकता है, दाढ़ी बनाने की आवश्यकता है। And he said he was a guy, he was a man in his sari. He was a man wearing a sari. वो एक व्यक्ति था जो साड़ी पहने हुए थे। And he says sadhana was just pretending to be a gopi. ओके, मतलब वो साड़ी पहन के अपने आप को गोपी जैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। Is this recommended by Srila Prabhupada? क्या ये श्री प्रभुपाद ने अनुमोदित किया है? No. नहीं। And this is, so we should be careful who we hear from. तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं। What are their habits? What is their character? उनका चरित्र क्या है? Who is their guru? उनकी आज्ञा क्या है? What are they following? और वो किसको पालन कर रहे हैं? So best is to follow the directives and encouragement of Shiva Maharaj. तो बहुत अच्छा है शिवा महाराज के जो निर्देश है उसको स्वीकार करें। And focus our hearing on within ISKCON Shiksha. और ISKCON के अंदर सुनने के लिए और जानने के लिए Srila Prabhupada said the entire spiritual world is within the four walls of the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. प्रभुपाद ने बताया था कि आध्यात्मिक संसार पूरा का पूरा आध्यात्मिक संसार कृष्ण बलराम मंदिर की चार दीवारों के अंदर है। Devotees in 24-hour kirtan, they are singing such sweet melodies. जो भक्त लोग 24 घंटे कीर्तन करते हैं वो बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन करते हैं। And we can understand that their character and their chastity is good. हम समझ सकते हैं कि उनका चरित्र अच्छा है। Yeah, so songs should be authorized. तो ये गीत जो है ये अनुमोदित होने चाहिए। I have an issue when people sing a bhajan and I say, who is the song written by? Who is the author? तो मेरे सामने जब कभी इस प्रकार से कोई भजन गाते हैं तो मैं पूछता हूँ कि किसने लिखा है, कौन इसको लिखने वाला है? And they say, oh, anonymous. और वो वहाँ बताते हैं कि पता नहीं किसने लिखा है। We don't know. तो हम नहीं जानते हैं। If you don't know, it means gambling. अगर हम नहीं जानते हैं उसका मतलब जुआ खेलने जैसा। We follow four regular principles. चार नियम पालन करते हैं। One of them is no gambling. उसमें से एक है कि जुआ नहीं करना है। So no gambling. जुआ नहीं करना चाहिए। Are not the songs of Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada and our Gaudiya Vaishnava Acharyas, is it not enough?
दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद हमारे बड़े आचार्य कहते हैं कि हैं क्या वो पर्याप्त नहीं है? Will they not give us the goal of becoming qualified to go back to Godhead? क्या वो हमें भगवत धाम जाने के लक्ष्य को प्राप्त कराने में मदद नहीं कर सकते? Or is our enjoyment just to enjoy? क्या हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ Or seek out some higher realization? हम सोचते हैं कुछ और ऊंचा सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Maya is very strong. माया बहुत शक्तिशाली है। In the guise of quote-unquote higher realization, we may be led to smoke ganja to get some higher realization. उच्च विचार प्राप्त करने के चक्कर में माया हमें गांजा भी मिला सकती है। One time I was on the Parikrama Marg in Vrindavan. एक बार वृंदावन में परिक्रमा कर रहा था। There was a bhajan kutir by the Jamuna. जमुना के बगल में एक भजन कुटीर थी। The sadhu invited me inside. साधु ने मुझे अंदर बुलाया। Oh, this is great. मैंने सोचा बहुत अच्छा। I'm a young devotee. मैं तो नया भक्त। Now I get to meet someone with real Braj Bhav. अभी मैं ब्रज के किसी साधु से मिलूंगा। He handed me some ganja. उन्होंने मुझे कुछ गांजा दिया। He said, smoke this. मैंने बोला कि इसको स्मोक करो। You will get the higher realization. आपको बहुत ऊंचे विचार प्राप्त होंगे। I said, no, thank you. मैंने बोला नहीं धन्यवाद। So we have to be careful हमें सावधान रहना चाहिए। of our association. किसका साथ हम लेते हैं उसके लिए सावधान रहना We're चाहिए। blessed that in ISKCON, हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम standards of character ISKCON में चरित्र लोग अच्छा होता है and behavior और व्यवहार अच्छा होता है। and chastity to the teachings of Srila Prabhupada उसमें प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति अनुगतता होती है। are very high. ये बहुत ऊंचा है ISKCON में। Does that answer your question? Yes, good. Thank you so much. Do we have time? Who's managing the show here? Do we have? Yeah, go ahead, Prabhu. My question is extension. Regarding the song, I am asking regarding the instruments also. Okay, go ahead. इसके आगे उनका प्रश्न है कि ये भजन के बारे में था और इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र कौन से उपयोग करने चाहिए। What do you want to know about the instruments, Prabhu? वाद्य यंत्रों के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? Because previously you was having guitar or everything. Yeah. Before coming to Krishna consciousness. Yes. And we see that in our line we don't use all of this kind of instrument. But nowadays we see sometimes some other instruments also. Okay, so your question is, can we use other instruments in Krishna consciousness besides mridanga, kartal, harmonium, right? Okay, translate. मुझे का प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति जैसे बाहर के लोग बहुत सारे अलग-अलग वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं, तो ISKCON में हम क्या मृदंग, करताल, हारमोनियम के अलावा कुछ और उपयोग कर सकते हैं? So Prabhupada, he had his preferred instruments. प्रभुपाद ने बताया था कुछ छोटे वाद्य यंत्र थे। He preferred the kartal, mridanga, and sometimes harmonium. प्रभुपाद जी करताल, मृदंग और कभी-कभी हारमोनियम उपयोग करते And हैं। sometimes he used also tempura. कभी-कभी वो तंबूरा को उपयोग करते हैं। And he mentions this. उन्होंने इसके बारे में बताया नहीं। There's a book that Srila Jayadvaita Maharaj, he's working on, he's about to publish. श्री जयदेव स्वामी महाराज एक पुस्तक लिख रहे हैं। It's called Srila Prabhupada's Kirtan Standards. तो उसमें उन्होंने श्री प्रभुपाद के कीर्तन के मानकों को बताया He है। has many quotes from Srila Prabhupada. उसमें श्री प्रभुपाद के बहुत सारे निर्देश लिखे। One interesting quote is that Srila Prabhupada said, you can use electric guitar in the kirtan if people will give more donations. वहाँ पे एक प्रभुपाद का निर्देश है एक जगह पे कि आप इलेक्ट्रिक गिटार उपयोग करेंगे अगर कीर्तन में तो लोग ज़्यादा डोनेशन देंगे। But generally in the temple room, we restrict to these 4 instruments, mridanga, kartal, and harmonium and tempura. तो सामान्यतः मंदिर कक्ष में हम केवल इन 4 वस्तुओं को करते हैं, मृदंग, करताल, हारमोनियम और तानपुरा। We use a principle of yukta vairagya. Yuktam vairagya uchate. हम युक्त वैराग्य के सिद्धांत का पालन करते हैं। What is that shlok, Rupa Goswami? Yuktam vairagya uchate. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjitaha
Nirbande Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate. So we can use everything in Krishna's service. तो हम कहते थे कृष्ण की सेवा में सभी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं. Srila Prabhupada says you can use these other instruments for the purpose of akarshan, attracting. श्री प्रभुपाद ने बताया कि आप लोगों को आकर्षित करने के लिए दूसरे वाद्य यंत्र का उपयोग कर सकते हैं. But a serious devotee, he should be focused on the holy name. और जो गंभीर भक्त हैं उनको नाम के ऊपर केंद्रित होना चाहिए. Doesn't matter if someone knows how to play mridanga good or kartal good, doesn't matter. He heals the holy name, he goes into ecstasy, rolls on the ground, tears come from the eyes. गंभीर भक्त जब भगवान का नाम सुनता है तो वो भाव में आ जाता है और मदन करता है, इसकी भी परवाह नहीं करता है. But some people, they come, they want to hear nice music, nice mridanga playing, nice kartal, and some other instruments also. कभी-कभी बाहर से लोग आते हैं तो उनको सुनने में अच्छा लगता है जब मदन करता है और कुछ वाद्य यंत्र बजते हैं. So for outreach purposes, they can be considered. तो अगर कभी प्रचार करते हैं तो उसके लिए उपयोग कभी-कभी किए जा सकते हैं. But not during the arti kirtans. तो आरती कीर्तन करने के लिए उनको उपयोग नहीं करता. Prabhupada is very specific. Arti kirtan means kol and kartal. प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट बताया है आरती कीर्तन मतलब मदन व करता. Arti kirtan is over when people say Jayom Vishnupad Paramahamsa. Then Arti kirtan is over. तो आरती कीर्तन करते हैं तो जय ओम विष्णुपाद से बोलना चालू करते हैं तब वो कीर्तन खत्म होता है. I'm serving now as ISKCON's kirtan minister. मैं अभी ISKCON में कीर्तन मिनिस्टर की जैसे सेवा कर रहा हूँ. My big project now is to have kirtan standards for ISKCON. तो मेरा एक प्रोजेक्ट है कि ISKCON में कीर्तन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए. So as per all my research, the temple is the most strict place. तो मैंने अपने अनुभव से देखा कि मंदिर जो है वो एक कड़ाई वाला स्थान है. And during the artik is the most strict time. और आरती का समय सबसे महत्वपूर्ण समय है. After that, we start having our preaching considerations. उसके बाद हमारे प्रचार के तौर तरीके आते हैं. So the local management, they can take some decision what is appropriate according to time, place and circumstance for their prachar. तो मंदिर के जो प्रबंधक हैं वो कुछ विचार कर सकते हैं कि प्रचार के लिए क्या-क्या का उपयोग किया जा सकता है. Does that answer your question? Yes, okay, good. Thank you. Hare Krishna. Okay, Mataji, last question. Everyone is hungry. Go ahead. आज के लेक्चर में जैसे बताया कि चैंटिंग का प्रभु जी ने कहा था, तो चैंटिंग में मन नहीं लगता है जब हम करते हैं, तो मैं मन कैसे करना चाहिए? Same thing. You find attentiveness in chanting. How to increase our attention to chanting. If you want to increase attentiveness in chanting, sit with some devotees who chant attentively. नाम के जप में अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसे भक्त के साथ बैठ के जप करे जो कि ध्यान से जप करता हो. This morning we were sitting with a group of devotees. We're all sitting around Tulsi. We're all chanting together. आज सुबह हम कुछ भक्तों के साथ बैठे थे जो कि तुलसी महारानी के चारों ओर बैठ के ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे. That's the best way. वो सबसे अच्छा तरीका है. Don't chant alone. अकेले नाम जप मत करिए. Find some good sangha. अच्छे भक्तों के साथ में नाम जप करिए. Chant with your family. अपने परिवार के साथ जप करिए. The family that prays together stays together. जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वो साथ में निवास भी कर सकते हैं. Invite other devotees to live near you. अपने घर के पास दूसरे भक्तों को भी रहने के लिए बुलाइए. Let us have some japa sangha. उसके बाद साथ में जप करिए. This is the best solution. ये सबसे अच्छा तरीका है. And if you can, come and chant with us here in the mandir. That is best. अगर आप यहाँ मंदिर में आके हमारे साथ जप कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है. Does that answer your question? Okay, good. Thank you very much. Thank you all for coming this morning. May our sab bahut abhari ho. I'm grateful to all of you. Thank you for coming. Thank you for tolerating me. Thank you for translating. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आज शाम को भी महाराज क्लास लेंगे और आरती संध्या आरती के बाद
संन्यास लीला चैतन्य महाप्रभु की संन्यास चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला के ऊपर महाराज आज शाम को प्रवचन करेंगे 7:30 बजे। हरे कृष्ण।